Assalamu alaikum students, I am Wasim Ikram. This is the 11th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी के मैप की। के मैप बनाते कैसे हैं, एक्सप्रेशन उसमें कैसे मैप कैसे करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसमें कॉन्सेंट्रेट हमने किया था सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस में। आज हम बात शुरू करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस। सम ऑफ प्रोडक्ट पिछली दफा किया था, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस से आज बात शुरू करेंगे। जिस तरह आप सम प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस मैप कर सकते हैं के मैप पे और फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं के मैप पे। उसी तरह ग्रुप्स बनाएंगे, उसी तरह आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगी जो अल्टीमेटली आप गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें। So before we start our discussion on mapping standard product of sum expressions onto a K-map, let us quickly revise the topics which we did last time. Last time basically हमारी discussion start हुई थी K-map से। We have 3 variable K-maps, 4 variable भी हो सकते हैं, 5 variables भी हो सकते हैं। उसमें 3, 4, 5 variable K-maps क्यों यूज होते हैं? Basically to simplify Boolean expressions having 3 variables, 4 variables and 5 variables. दो तरीके हमने देखे थे टू स्पेसिफाई 3 वेरिएबल के मैप। रो फॉर्मेट भी हो सकता है, कॉलम फॉर्मेट भी होगा। 3 वेरिएबल के मैप में और कार्नॉफ मैप में बेसिकली 8 सेल्स हैं रिप्रेजेंटिंग 8 मिन टर्म्स या 8 मैक्स टर्म्स। इसी तरह जो 4 वेरिएबल के मैप है, कार्नॉफ मैप है, उसमें 16 सेल्स हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ऑफ कोर्स ईच ऑफ दोज 16 सेल्स रिप्रेजेंट 16 मिन टर्म्स या 16 मैक्स टर्म्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमने ये कहा था हैविंग शोन दी कार्नॉफ मैप्स, उनमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। कैसे डालेंगे? बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्म्स में एक्सप्रेशन होती हैं। एक जो फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट मिन टर्म्स होंगे। तो जो भी मिन टर्म्स आपके पास हैं उनको करस्पॉन्डिंग सेल्स में एज 1 मार्क कर दें। जो मिन टर्म्स नहीं है वो 0 होंगे। So after having marked the K-map, appropriate K-map, 3 variable या 4 variable depending on the domain of the expression, अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। So you form groups. You start by forming the largest group. So आप अगर let's say 3 वेरिएबल का K-map है, the largest possible group which you can form is a group of 8 cells. So 8 सेल का होगा। उसके बाद आप कोशिश करेंगे 4 सेल का कोई अगर ग्रुप बन जाए, फिर 2 सेल का और 1 सेल का। ग्रुप्स हमने बताया था देयर इज नो लिमिट के कितने होने चाहिए। जितने भी आपके पास वंस हैं और वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं तो उतने ग्रुप्स बन जाएंगे उसमें। अब जरूरी नहीं है कि 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो अलग-अलग से हों, कुछ ओवरलैप भी कर रहे होते हैं, पर उनमें से एक चीज आप याद रखिएगा, डिफरेंट ओवरलैपिंग जो ग्रुप हैं उनमें से एटलीस्ट एक सेल ऐसा होगा जो दोनों में नहीं है, राइट? इसीलिए आप 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप बन रहे हैं। अगर कोई एक वन जो है दोनों ग्रुप में है तो ऑफकोर्स डिफरेंट ग्रुप बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो बेसिकली आफ्टर हैविंग मैप द के मैप्स, ग्रुप बनाया। ग्रुप्स जो हैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट टर्म्स, सिंपल प्रोडक्ट टर्म्स दे रही हैं, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नहीं है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में तो फिर कैसे करेंगे? आपके पास नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लें, वही जो रूल हमने पढ़ा था a+a बार यूज करते हुए स्टैंडर्ड आ जाएगी। स्टैंडर्ड जब एक्सप्रेशन आ गई आप मैप कर दें के मैप में। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली भी जो नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन है वो के मैप में मैप कर सकते हैं उसमें। वो कैसे? बेसिकली आपने लेट्स से पहली टर्म उठाई, वो आप टर्म जो है के मैप में जहां जहां भी जो भी सेल्स हैं जिनमें वो टर्म कॉमन है या नजर आ रही है वो उधर आप 1 मार्क कर देंगे उसमें। सो अल्टीमेटली जितनी भी नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स हैं आपके सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में वो आपने वंस के तौर पे मार्क कर दी के मैप में। उसके बाद वही प्रोसेस है, ग्रुप्स बनाएं। ग्रुप्स जो हैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट टर्म के सूरत में एक एक्सप्रेशन दे देगा। उसके बाद हमने बात की थी कि ट्रुथ टेबल जो है बेसिकली जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं उसका पहले आप फिक्स फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें इनपुट्स दिए होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स दिए होते हैं। अगर आपके पास ट्रुथ टेबल है या फंक्शन टेबल है देन यू डोंट नीड टू फर्स्ट राइट एन एक्सप्रेशन और फिर उसको मैप करें। आप डायरेक्टली भी उसको मैप कर सकते हैं के मैप में, ठीक है? तो लेट्स से 8 इनपुट कॉम्बिनेशन है, बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं, उसके 8 आउटपुट्स होंगे। के मैप कौन सा यूज करेंगे? 3 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। सो हर इनपुट कॉम्बिनेशन की हर जो आउटपुट है 1 और 0 होंगे, वो डायरेक्टली आप के मैप में मैप कर दें। उसके बाद क्या करेंगे? वही आप दोबारा ग्रुपिंग फॉर्म करेंगे, एक एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास। लास्ट जो टॉपिक हमने पिछली दफा डिस्कस किया था डोंट केयर स्टेट्स। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक 5 वेरिएबल का या 6 वेरिएबल का कोई सर्किट है, 5-6 वेरिएबल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है उनमें से कुछ वेरिएबल्स यूज ना हो रहे हो, फिर क्या करेंगे उसमें? बेसिकली हमने कहा था उन अनयूज स्टेट्स को डोंट केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो अनयूज स्टेट्स हैं उनका क्या करना है? बेसिकली वो डोंट केयर स्टेट्स हैं। आउटपुट में उधर हम 1 भी मार्क नहीं करते, 0 भी मार्क नहीं करते, उधर हम x सिंबल डाल देते हैं उसमें। फायदा क्या हो रहा है? जब इस पूरे फंक्शन टेबल को हम मैप कर रहे हैं कार्नॉफ मैप में तो उधर हमारे पास सेल्स में 0s भी आएंगे, 1s भी आएंगे और x भी आएगा।
नेक्स्ट जब स्टेप होता है सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ग्रुप्स बनाने हैं. सो हम देखेंगे कि अगर एक बड़ा ग्रुप बन रहा है बाय सेटिंग दोस एक्सेस टू वंस, देन वी डू दैट. ठीक है. सो लेट्स सपोज अगर हम x को 0 रखते हैं तो हमारा ग्रुप 4 का बन रहा है उसमें. अगर उन x को हम 1 कर दें तो 8 का ग्रुप बन रहा है. सो वी विल सेट दोस एक्सेस टू वंस और एक 8 सेल का एक ग्रुप बन जाएगा जो हमारे पास एक सिंपलर प्रोडक्ट टर्म दे देगा. सो इन समरी जो क्रॉस हैं, जो डोंट केयर स्टेट्स हैं, उनको 0 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 से भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इन द कार्नॉफ मैप. सो ये तो थी बात पिछले लेक्चर की. Today we start with mapping the product of some forms of expression directly into the K-map. और उधर से simplify कैसे करेंगे इसमें. Generally तरीका वही है जो आपने sum of product form की expression के साथ यूज किया था. Okay, let us just recall the product of some form of expression. इसमें क्या होता है basically product of sums हमने किया था. So आपके पास sum terms हैं, उनको आपने सारों को AND कर दिया हुआ, right? नाउ स्टैंडर्ड अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, उसमें जो ये सम टर्म्स हैं उनको क्या कहते हैं, बेसिकली उनको मैक्स टर्म्स कहते हैं उसमें. सो आपके पास स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास मैक्स टर्म्स हैं. सो अगर आपके पास 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की, उसमें कितने मैक्स टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं. इसी तरह 4 वेरिएबल की प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, उसमें कितने मैक्स टर्म्स हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं उसमें. नाउ इट इज़ पॉसिबल, वेल नॉर्मली सारे मैक्स टर्म्स नहीं होते किसी एक्सप्रेशन में, पहले 2 होंगे या कोई और डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगी. अब ये जो मैक्स टर्म्स हैं इनको कैसे आप मैप करेंगे के मैप में. बेसिकली लेट्स जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल. लेट अस सपोज दैट यू हैव ए 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसमें इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. उसकी पहली जो टर्म है मैक्स टर्म जो है a प्लस b, राइट. ये एक सम टर्म है और यही आपके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, राइट. अब इसको आप के मैप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. नाउ इफ यू रिमेंबर, मिन टर्म्स जो हैं वो आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस की सूरत में. मैक्स टर्म्स जो हैं वो आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 की सूरत में. सो जस्ट रिमेंबर दिस, व्हेन यू मैप ए प्रोडक्ट टू सम एक्सप्रेशन इन द के मैप, तो जो भी मैक्स टर्म प्रेजेंट है उसको आप एज 0 मार्क करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सेल में, जो के मैप के सेल में, राइट. सो ये जो एग्जांपल मैंने दी थी 2 वेरिएबल की, पहला मैक्स टर्म जो है वो मौजूद है, बाकी मैक्स टर्म्स नहीं है. सो कौन सा सेल जो होगा जिसमें आप 0 मार्क करेंगे, सेल जो है a बार b बार. बाकी जो है सारे सेल्स क्या करेंगे जिनमें मैक्स टर्म्स नहीं है वो सारे वंस कर देंगे इसमें. सो आफ्टर हैविंग मैप्ड द एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या करना है, बेसिकली आप ग्रुपिंग पे आ जाएंगे. So before we have a look at the grouping thing, let us map the standard product of sum expression onto a K-map. So let us have a look at some examples. Consider the standard product of sum expression having a domain of 3 variables. What is the size of K-map or the Karnaugh map which you would use to simplify this expression? Now, since the domain is of 3 variables, therefore you would be using a 3-variable Karnaugh map. Now, by looking at the expression which has 4 sum terms, a plus b plus c bar, the second term has the variables a plus b bar plus c, the third term has the variables a bar plus b plus c bar, and the last and the fourth term has the variables a bar plus b bar plus c bar. Now, max terms are represented by 1, 2, 5 and 7 in the function table. The cells representing the 4 max terms are marked with zeros, remaining cells are marked with ones. Now you need to remember this, whenever you map max terms onto a K-map, you mark the present max terms with zeros. जो max terms expression में नहीं है, they are marked with ones. This is opposite to what you do with sum of product expression, जिसमें जो min terms present होते हैं उनको 1 से mark करते हैं, जो नहीं होते हैं उनको 0 से करते हैं. Now, similar to that sum of product expression, इसमें भी कोई भी आप के मैप यूज कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट या रो फॉर्मेट, दोनों से आंसर एक ही आएगा. पिछले लेक्चर में जैसे हमने बात की थी, नॉन स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं के मैप्स पे. इसी तरह आप नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स जो हैं आप के मैप पे मैप कर सकते हैं. इधर हम डिस्कस नहीं करेंगे, विद एक्सपीरियंस यू कैन यूज देम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है जरा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स को के मैप में प्रेजेंट करना, बहरहाल आप कर सकते हैं उसमें. Okay, now having mapped a product of sum expression onto a K-map, next step क्या करना है, basically वही groups form करना है उसमें. ग्रुप्स आप किस साइज के फॉर्म करेंगे और किन सेल्स को यूज करेंगे, बेसिकली द प्रोसीजर इज द सेम. यू वुड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 8, 4, 2, 1 मल्टीपल्स ऑफ 2. 4 वेरिएबल का के मैप है, देन यू कैन फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ 16 सेल्स.
लास्ट टाइम जब हमने बात की थी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ग्रुप्स जो आपने बने थे 1 के ग्रुप्स बनाए थे. इस केस में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आप ग्रुप्स बनाएंगे 0 सेल्स के. जिन सेल्स में जीरोस हैं उनकी ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें वंस जो हैं उनको छोड़ देंगे इसमें. सो ग्रुप्स अगेन जो हैं दे कैन बी फॉर्म्ड रो वाइज, कॉलम वाइज, दे कैन बी स्क्वायर, दे कैन बी रेक्टेंगल. एंड जैसे हमने बात की थी प्रोडक्ट पावर ऑफ 2 होना चाहिए. सो 6, 12, 14 टाइप के ग्रुप नहीं होंगे उसमें. So let us have a look at some examples which show us how we can form groups for different expressions. Consider a 3-term product of some expression mapped to a 3-variable column-based Karnaugh map. A single group of 2 cells and a group of 1 cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term B plus C. The second group comprising of cell 3 forms the sum term A plus B bar plus C bar. The simplified product of sum expression has 2 terms. How many terms did the original expression have? Basically, you see 3 zeros in the Karnaugh map, so the original expression had 3 max terms. The simplified expression has basically 2 sum terms. Consider now the 4-term product of sum expression mapped to the 3-variable row-based K-map. 3-variable row-based K-map क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है. So you don't need to use a 4-variable K-map. 2 groups of 2 cells each and a third group of single cell are formed. The single cell group comprising of cell 0 forms the sum term A plus B plus C. The second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term A bar plus C bar. The third group of zeros comprising of cells 6 and 7 forms the sum term A bar plus B bar. Now the product of sum expression which has been simplified has 3 sum terms A plus B plus C, the second term A bar plus C bar, the third term A bar plus B bar. ओरिजिनल टर्म्स कितनी थी, कितने मैक्स टर्म्स थे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में? 4 मैक्स टर्म्स थे. कैसे पता लग रहा है? के मैप में अगर आप देखें आपको 4 जीरोस 4 सेल्स में नजर आ रहे हैं. कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ ए 3-variable प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. It has to be simplified, so a 3-variable Karnaugh map is used. Now 2 groups of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 1 form the sum term A plus B. The second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term B plus C. Now the simplified expression has only 2 sum terms A plus B and B plus C. The original expression, as can be seen from the Karnaugh map, had 3 max terms. So of course the expression has been simplified. Consider the 3-term product of sum expression mapped to the 3-variable row-based K-map. One group of 2 cells and another group of single cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 0 and 1 forms the sum term A plus B. The second group comprising of cell 6 forms the sum term A bar plus B bar plus C. How many terms does the simplified expression have? Only 2 sum terms A plus B and A bar plus B bar plus C. How many terms did the original expression have? 3 terms. Specified by zeros in 3 cells. Now consider an example of a 4-variable K-map. Consider the 5-term product of sum expression mapped to the 4-variable K-map. 3 groups of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term A plus B bar plus C. The second group of zeros comprising of cells 0 and 4 forms the sum term A plus C plus D. The third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term B plus C bar plus D. So the product of sum expression simplifies to 3 terms, 3 sum terms A plus B bar plus C, A plus C plus D and B plus C bar plus D. How many terms did the original expression have? Basically 5 max terms, which are indicated by 5 zeros in the Karnaugh map. Consider another example of a 4-variable K-map used for mapping products of sum expressions. The 8-term product of sum expression is mapped. 2 groups of 4 cells and 1 group of 2 cells are formed. The first group of zeros comprising of cells 0, 1, 4 and 5 forms the sum term A plus C. The second group of zeros comprising of cells 1, 5, 9 and 13 forms the sum term C plus D bar. The third group of zeros comprising of cells 2 and 10 forms the sum term B plus C bar plus D. The product of sum expression that has been reduced has 3 sum terms A plus C, C plus D bar, B plus C bar plus D. How many max terms did the original expression have? It had 8 terms.
specified by zeros marked in the K-map. Consider the last example of the use of a 4-variable K-map to map product of sum expression. 3 groups of 2 cells and 1 group of a single cell are formed. The first group of zeros comprising of cells 4 and 5 forms the sum term A plus B bar plus C. The second group of zeros comprising of cells 5 and 7 forms the sum term A plus B bar plus D bar. The third group of zeros comprising of cells 1 and 9 forms the sum term B plus C plus D bar. The fourth group comprising of cell 14 forms the sum term A bar plus B bar plus C bar plus D. So the sixth term product of sum expression, having of course 6 max terms, is reduced to a 4 sum term expression. The 4 sum terms are A plus B bar plus C, A plus B bar plus D bar, B plus C plus D bar, and A bar plus B bar plus C bar plus D. We have seen several examples of mapping the product of sum expression directly onto a K-map. इसको जरा समराइज कर लें. ग्रुप्स के साइजेस कितने होंगे? अगर 3 वेरिएबल के मैप है, द लार्जेस्ट ग्रुप वुड बी ऑफ 8 सेल्स. अगर सारे मैक्स टर्म्स प्रेजेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली 0 होगा, 1 नहीं होगा. 1 रिमेंबर, अगर 8 सेल्स होते फॉर ए 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, उसका आउटपुट 1 आना था. फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन हो, सारे 8 मैक्स टर्म्स अवेलेबल हैं, 8 सेल्स बनेंगे, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स बनेगा, आउटपुट हमेशा 0 होगी. वट एवर द इनपुट्स ए बी सी जो मर्जी चेंज करते रहे, आउटपुट हमेशा 0 होगी. नाउ इन ए 3 वेरिएबल कार्नॉफ मैप, अगर आपका 4 सेल्स का ग्रुप बनता है जिनमें 4 जीरोस हैं, तो आपके पास कितना सम टर्म, कितने वेरिएबल की सम टर्म आएगी? बेसिकली 1 वेरिएबल की आएगी. अगर 3 वेरिएबल कार्नॉफ मैप है, उसमें 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, उसमें देन यू विल गेट ए सम टर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स. एंड सिमिलरली ए सिंगल सेल ग्रुप इन ए 3 वेरिएबल कार्नॉफ मैप वुड गिव यू ए सम टर्म ऑफ कितने वेरिएबल्स का? 3 वेरिएबल्स का. Now, let us talk about a 4 variable Karnaugh map. 4 variable Karnaugh map में of course 16 cells होते हैं. मैक्सिमम मैक्स टर्म्स कितने हो सकते हैं? 16 के 16 हो सकते हैं. तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ 16 सेल्स. आउटपुट क्या होगी? हमेशा 0 होगी, वट एवर द इनपुट्स. उससे छोटा नेक्स्ट ग्रुप कितने साइज का हो सकता है? बेसिकली 8 सेल्स का होगा. 8 सेल्स में सारे जीरोस होने चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन. सो a 4 variable Karnaugh map having a group of 8 cells would give you a sum term of how many terms, variables? A single variable. इसी तरह अगर आपका 4 cells का एक ग्रुप बन रहा है, how many variables are you going to have? You are going to have a sum term of 2 variables. 2 cells का एक ग्रुप बन रहा है, again you would have a sum term of 3 variables. एंड अगर एक सिंगल सेल का ग्रुप बन रहा है 4 वेरिएबल कार्नॉफ मैप में, यू वुड हैव ए सम टर्म ऑफ 4 वेरिएबल्स. सो ये रूल्स जनरली याद रखिएगा. सो तकरीबन मोर लेस ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, वही रूल्स आपके अप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम ए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. If you look at a Karnaugh map, 3 variable, 4 variable, 5 variable का भी कह सकते हैं, या 2 variable का भी. Now a Karnaugh map would have zeros and ones. अगर आप ग्रुप बना लें जो ones का है, तो फिर आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की. अगर उसी Karnaugh मैप में बजाय 1 जहाँ है उनका ग्रुप बनाए, जीरोस का ग्रुप बना लें, आपके पास क्या आएगी? वही फंक्शन आएगा रिप्रेजेंटेड इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. अगर ये जो अब 2 एक्सप्रेशन आ रही हैं, एक जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, दूसरी एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में. बेसिकली इनको अगर आप इंप्लीमेंट करें, ऑफ कोर्स 2 डिफरेंट सर्किट्स बनेंगे, उनका जो रिजल्ट है या जो फंक्शन है दोनों का एक जैसा होगा. राइट. सो बड़ी आसानी से हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग के मैप्स. फायदा क्या था? हमने क्या बात की थी पिछली दफा? बेसिकली कोई भी एक फंक्शन हो सकता है उसके कुछ जो उसके मिन टर्म्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इट्स मैक्स टर्म्स. सो अगर मैक्स टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेशन आप इंप्लीमेंट करें यूजिंग लॉजिक गेट्स, आपका सर्किट जो है सिंपल हो सकता है उसमें. अगर मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर इंप्लीमेंट करें, सर्किट आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो. तो आप बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं इन वन फॉर्म और टू द अदर टू इंप्लीमेंट सर्किट्स. Let us have a look at an example which shows this implementation, that is, you switch from one form to the other. Consider the 4 variable Karnaugh map used to simplify the product of sum expression. The Karnaugh map shown has been used before to simplify a product of sum expression. There, groups of zeros were formed, which resulted in a 4-term expression. Using that same Karnaugh map, now groups of ones are formed instead of groups of zeros. So 2 groups of 4 cells and 3 groups of 2 cells are formed.
The first group of ones comprising of cells 0, 2, 8 and 10 forms the product term B bar D bar. The second group of ones comprising of cells 2, 3, 10 and 11 forms the product term B bar C. The third group of ones comprising of cells 12 and 13 forms the product term A, B, C bar. The fourth group of ones comprising of cells 13 and 15 forms the product term A, B, D. The fifth group of ones comprising of cells 2 and 6 forms the product term A bar, C, D bar. Now considering the simplified product of some expression obtained from this K-map, if it is multiplied together, you will receive terms B bar D bar plus B bar C plus A B C bar plus A B D plus A bar C D bar, which is of course equivalent to the sum of product form of the expression. In the last example, we just saw an example where we were able to convert from a standard sum of product form into a product of sum form using the K-map. K-map अगर आपके पास हो, आप आसानी से एक फॉर्म या दूसरी फॉर्म में आप एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं उसमें. Now, in the last lecture, we mentioned that you can also directly map the contents of a truth table onto a K-map. इधर भी क्या कर सकते हैं? Yes, बिल्कुल कर सकते हैं. Truth table के जो outputs हैं zeros and ones, they have nothing to do with a sum of product expression or a product of sum expression. वो तो जब आप मैप कर लेते हैं के मैप में, उधर से जब आप एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकती है या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हो सकती है. सो सिंपली यू हैव ए फंक्शन टेबल, उसके आउटपुट्स हैं वो आप डायरेक्टली के मैप में डाल दें. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, देन यू ग्रुप जीरोस, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक्सप्रेशन आ जाएगी. अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के एक्सप्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, देन यू ग्रुप वंस, और वो जो वंस हैं वो आपको प्रोडक्ट टर्म्स दे देंगे. लेट अस टॉक अबाउट a 5 variable Karnaugh map. 5 variable Karnaugh map कहाँ यूज होगा? बेसिकली expressions having 5 variables. 5 variable Karnaugh map के कितने cells होंगे? बेसिकली इट्स 2 raised to power 5, 32 cells होंगे. अब 32 cells का Karnaugh map बनाना पेपर पे भी बड़ा मुश्किल काम है, उसमें काफी बड़ा साइज हो जाएगा उसमें. सो इसको कैसे बनाएंगे? और दूसरी बात ये ना, इन 32 सेल कार्नॉफ मैप जब बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, उधर से ये भी रियलाइज करना कि कौन सा ग्रुप कहाँ बन रहा है वो भी मुश्किल हो जाएगा. सो टू रिप्रेजेंट ए 32 बिट 5 वेरिएबल कार्नॉफ मैप इन ए कंसाइज और ए कॉम्पैक्ट फॉर्म, यू वुड यूज 2 4 वेरिएबल कार्नॉफ मैप्स. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली लेट्स सपोज यू हैव ए 4 वेरिएबल कार्नॉफ मैप जिसके 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं. उस कार्नॉफ मैप को आप कह दें कि ये बेसिकली a इक्वल्स टू 0 वेरिएबल के लिए. दैट मीन्स a 0 हो तो ये वाला आप मैप इस्तेमाल करें. आपके पास एक आइडेंटिकल मैप होगा अगेन ऑफ 16 सेल्स, 16 रोज, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, और इस मैप को आप कहेंगे फॉर a इक्वल्स टू 1. सो दैट मीन्स यू हैव 2 4 into 4 मैप्स. एक जो मैप है a इक्वल्स टू 0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा a इक्वल्स टू 1 के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, अब 4 into 4 के 2 आपके पास मैप्स हैं. टोटल सेल्स कितने हो गए? 32. पर ये आप 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट काम क्या करना है? बेसिकली आपके पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना है. यू वुड फर्स्ट ऑफ ऑल मैप दैट फंक्शन और दैट एक्सप्रेशन ऑन टू दी 5 वेरिएबल के मैप. तो जो वंस हैं या जीरोज हैं दोनों मैप्स में आ जाएंगे. a इक्वल्स टू 0 वाला जो मैप है और a इक्वल्स टू 1 वाला मैप दोनों में आ जाएंगे. ग्रुप्स कैसे फॉर्म करेंगे? अगेन ग्रुप का वही रूल है, बेसिकली पावर्स ऑफ 2. तो सबसे बड़ा ग्रुप किस साइज का हो सकता है इस केस में? बेसिकली 32 सेल्स का. तो 16 सेल ऊपर वाले, 16 सेल नीचे वाले, दे फॉर्म ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ 32 सेल्स. अगर सारे 32 सेल्स वंस हैं, आपके पास क्या आउटपुट आएगी? अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, मिन टर्म्स जो हैं, बेसिकली द आउटपुट वुड बी 1. सो a b c d e 5 वेरिएबल्स है ना, कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो आपका आउटपुट हमेशा 1 रहेगा. इफ यू हैव ए ग्रुप ऑफ 16 सेल्स, राइट, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगी? लेट्स से 16 वंस हैं, आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास एक प्रोडक्ट टर्म आएगी जिसका एक ही वेरिएबल होगा. अगेन यू हैव ए ग्रुप ऑफ 8 सेल्स, फिर कितना होगा? बेसिकली 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, और सिमिलरली आप 4 का भी ग्रुप होगा, 2 का भी होगा और 1 सेल का भी होगा. ग्रुप्स जो हैं बेसिकली अब 2 डायमेंशन में फॉर्म हो रहे हैं. ऊपर भी कुछ वंस होंगे, नीचे भी होंगे. सो यू कुड हैव 2 सेल्स लेट्स से इन द अपर प्लेन, 2 cells in the lower plane. So if you have 2 ones in the upper 2 cells and 2 ones in the lower 2 cells, you form a group of 4, right? So a group spans both the planes. Let us now have a look at an example where you are going to be seeing different groups. Let us first consider a 5 variable Karnaugh map. It has 2 planes
of 16 cells each. The first plane where variable a is equal to 0 has cells 0 to 15 as shown on the Karnaugh map. The second plane where a equals to 1 has cells from 16 to 31. Let us consider the plane a equals to 0. There are cells marked with 6 ones. Now let us consider the other plane a equals to 1. The plane a equals to 1 has 8 cells marked with 1s. Now how many groups are formed and what are the sizes of different groups? Let us have a look. Starting with a equal to 0 map, the cells 1 and 5 form a group of 2 cells. These 2 cells along with the cells 17 and 21 in map a equals to 1 form a group of 4 cells. This group of 4 cells represents the term b bar, d bar, e. Now consider the cell 2 in map a equals to 0. Cell 2 does not form a group with any adjacent cells. Therefore, it is a group of single cell having the product term a bar, b bar, c bar, d, e bar. It has 5 variables. Now consider the cells 10 and 11 in map a equals to 0. These 2 cells form a group of 4 with adjacent cells 26 and 27 in map a equals to 1. Therefore, the group of 4 cells represents the product term b, c bar, d. Similarly, the cells 10 and 14 in map a equals to 0 and cells 26 and 30 represent a group of 4 cells representing the product term b, d, e bar. Now, considering the map a equals to 1, the 4 cells 16, 17, 20 and 21 represent the product term a, b bar, d bar. The cell 25 along with cell 27 in map a equals to 1 represents the product term a, b, c bar, e. We have looked at an example of a 5 variable Karnaugh map. ग्रुप्स उसमें उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह हमने 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल में किया था. ग्रुप साइजेस भी हमने बताया था पावर ऑफ 2 होना चाहिए. नाउ इट इज डिफिकल्ट टू परसीव ए 2 डायमेंशनल Karnaugh मैप. उसमें गलती के इम्कान ज्यादा हैं उसमें. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज ए 5 वेरिएबल Karnaugh मैप. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंप्लीफाइंग ए 5 वेरिएबल Karnaugh मैप. कैसे करेंगे? अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका है जो पहले आप 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के साथ करते रहे. सो क्या होगा? वही ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स डिफरेंट सेल्स के 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का. सबसे पहले कौन सा ग्रुप होना चाहिए? द लार्जेस्ट ग्रुप. अगर 32 का बनता है फाइन, आइडियली 32 का नहीं होगा. सो यू स्टार्ट बाय फॉर्मिंग ए ग्रुप ऑफ 16 सेल्स. 16 का बनता है, उसके बाद 8 का या मजीद 16 का अगर कोई बन सकता है. सो यू स्टार्ट विद द लार्जेस्ट ग्रुप एंड यू गो टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट ग्रुप. ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर जो ग्रुप है उसमें यूनिक वंस होने चाहिए. उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं हो जो वंस हैं मल्टीपल ग्रुप्स में आ रहे हो और यूनिकनेस नहीं हो. ठीक है, हर ग्रुप में यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वंस का होना जरूरी है. अगेन 5 वेरिएबल जो Karnaugh मैप है, ये आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स के एक्सप्रेशन तो निकाल सकते हैं बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ वंस. क्या आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं? यस यू कैन. ऑफ कोर्स वही जो ग्रुप्स आप बना रहे हैं वंस के, आप 0 के अगर ग्रुप्स बना दें उसमें तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा. आपके पास सम टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी इसमें. Now, we have talked about simplifying expressions. शुरू हमने बात की थी Boolean algebra के रूल्स अपने अप्लाई करने हैं. उसके बाद हमने बात की थी कि आपने Karnaugh maps के थ्रू करना है. So Karnaugh maps provide you with an easier, a systematic way of simplifying expressions. 6 वेरिएबल की अगर एक्सप्रेशन आपके पास हो तो Karnaugh मैप से कर पाएंगे. हमने अभी बात की कि 5 वेरिएबल का जो Karnaugh मैप है उसको भी बनाना जरा 32 जिसके सेल्स हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो 2 डायमेंशनल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसी तरह अगर 6-7 वेरिएबल का होगा तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक नए तरीके की विच वी यूज टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस ऑफ मोर देन 5 वेरिएबल्स. और वो जो तरीका है वो एक प्रोग्रामिंग का तरीका है. बेसिकली यू कैन प्रोग्राम ए कंप्यूटर और वो आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस निकाल के दे देगा. उसमें तो वो मैनुअली बेसिकली नहीं किया जाता, तो प्रोग्राम फॉर्म में मेथड को यूज किया जाता है. तो भला ये तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. We have been talking about simplifying expressions and implementing a circuit. अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी उसमें आउटपुट जो था सर्किट का, कितने आउटपुट्स थे? बेसिकली हम एक ही आउटपुट की बात कर रहे थे. हमारे पास 4 इनपुट्स हैं जिससे 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं. आउटपुट हमेशा हमने 1 ही रखा है. यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं. आउटपुट हमेशा 1 ही रहा है जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है इसमें. नाउ प्रैक्टिकल सर्किट्स डू हैव मोर देन सिंगल आउटपुट. उसके 4 आउटपुट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं इसमें. अब इस किस्म के सर्किट्स को कैसे हम बनाएंगे, उसका फंक्शन पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसमें. सो 2 चीज़ें. सो पहले तो हम बात करते हैं कि इसके आउटपुट जो है सर्किट के जो डिफरेंट आउटपुट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक फंक्शन टेबल की फॉर्म में. फंक्शन टेबल जब भी हमको मिल जाएगा बना लेंगे. उसके बाद हमने क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन टेबल यूजिंग ए Karnaugh मैप.
कार्नॉफ मैप हमें क्या देगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस होंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हम सर्किट बना देंगे इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर एन एग्जांपल। एग्जांपल कौन सी है, जो हमने शुरू में एक लेक्चर में बात की थी, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस। जो आप रेलवे स्टेशन जाएं उधर आपको एक डिजिटल क्लॉक नजर आएगी, बसों में सामने डिजिटल क्लॉक नजर आती है। डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिजिट होता है। एक डिजिट है जो 8 की फॉर्म में है और उस पर आप डिफरेंट डिजिट 0 to 9 डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें। इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को अगर आप गौर से देखें, इसमें 7 सेगमेंट्स हैं, इसलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। इसका डायग्राम भी हम देखेंगे। बहरहाल इसमें 3 हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं और 4 वर्टिकल सेगमेंट्स हैं। सो अगर कोई भी डिजिट, लेट्स से डिजिट 3 डिस्प्ले करना है, तो वो 3 जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन करते हैं और 2 जो राइट साइड पे वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उनको ऑन कर देते हैं। यू सी ए डिजिट 3। सिमिलरली अगर डिजिट 0 डिस्प्ले करना है तो ऊपर वाला सेगमेंट जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है उसको ऑन कर देंगे और 2 जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे और 2 वर्टिकल सेगमेंट्स जो हैं राइट साइड पे उनको भी ऑन कर देंगे। यू सी ए डिजिट 0, राइट। सो व्हेन यू नीड टू डिस्प्ले एनी नंबर बिटवीन 0 to 9 यू वुड बी टर्निंग ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स हमने बताए हैं, अगर इनको काउंट करें तो ये आपके पास 7 सेगमेंट्स आ जाते हैं, राइट। सो लेट्स सपोज जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है वो किन नंबर्स के लिए ऑन होगा। लेट्स से 0 अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा। 1 के लिए ऑन करना पड़ेगा, नहीं 1 के लिए ऑन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 2 डिस्प्ले कर रहे हैं उस सेगमेंट को ऑन करना पड़ेगा, 3 के लिए भी करना पड़ेगा, 4 के लिए नहीं करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो बेसिकली यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टेबल ऑफ दिस 7 सेगमेंट डिस्प्ले। फंक्शन टेबल में कितने इनपुट्स होंगे और कितने आउटपुट्स होंगे। नाउ ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसको लेट्स से आप 3 डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो बाइनरी कोड क्या भेजेंगे, बेसिकली आप BCD कोड भेज रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था BCD कोड जो है नंबर 0 से 9 तक डिस्प्ले करता है। सो BCD कोड में जो नंबर हैं 1 0 1 0 जो 10 रिप्रेजेंट करता है वो एग्जिस्ट नहीं करता या वो बेसिकली इनवैलिड है, राइट। सो 4 बिट के नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 0 टू 1 0 0 1 हम भेजेंगे और उनसे एक आउटपुट जनरेट होगी या मल्टीपल आउटपुट्स जनरेट होंगी जो 7 सेगमेंट को कंट्रोल करेंगे। सो आपका जो सर्किट है उसके 4 इनपुट्स होंगे जहां आप BCD नंबर भेज रहे हैं। आउटपुट्स कितने होंगे, उसके 7 आउटपुट्स होंगे जो हर सेगमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो लेट्स सपोज यू डिस्प्ले द नंबर 0, इनपुट पे क्या भेजेंगे 0 0 0 0, आउटपुट पे क्या आना चाहिए। बेसिकली जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर आप देखें उसमें जो बीच वाला सेगमेंट है जिसको सेगमेंट G कहते हैं वो ऑफ होगा, बाकी सेगमेंट सारे जो हैं 6 के 6 वो ऑन होने चाहिए। तो जो सर्किट की आउटपुट है जिसके 7 आउटपुट्स हैं उनमें से 6 जो आउटपुट्स हैं वो 1 होने चाहिए, एक जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए। इसी तरह लेट्स सपोज यू नीड टू डिस्प्ले द नंबर 1 ऑन दैट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपके सर्किट के इनपुट पे क्या होगा, BCD नंबर 0 0 0 1। आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट एज वी हैव जस्ट सेड 7 आउटपुट्स हैं, उनमें से 2 सेगमेंट्स जो हैं वो ऑन करने हैं, बाकी 5 सेगमेंट्स ऑफ करने हैं। सो वो जो 2 सेगमेंट्स हैं विच रिप्रेजेंट द नंबर 1 दे आर गोइंग टू बी टर्न्ड ऑन, बाकी 5 सेगमेंट्स दे आर गोइंग टू बी zeros और टर्न्ड ऑफ। Let us try to implement the functions for this particular circuit which has 4 inputs and 7 outputs. Let's represent the 7 outputs with symbols small a, small b, small c, d, e, f and g. These 7 symbols represent the 7 segments of a 7 segment display. कितने फंक्शन टेबल्स होंगे आपके ख्याल में? फंक्शन टेबल हमने जैसे शुरू में बात की थी, हर फंक्शन टेबल का एक ही आउटपुट होगा, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल इनपुट्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स होंगी, आउटपुट हमेशा 1 होगा। इस पर्टिकुलर सर्किट में 7 आउटपुट हैं, सो आपको 7 डिफरेंट फंक्शन टेबल बनाने होंगे। ईच फंक्शन टेबल वुड गिव यू द आउटपुट फॉर ईच सेगमेंट। सो सेगमेंट ए के लिए एक फंक्शन टेबल होगा, सेगमेंट बी के लिए अलग होगा, इसी तरह C, D, E, F एंड G। इन सारे फंक्शन टेबल्स में इनपुट्स कितने होंगे, कितने वेरिएबल्स होंगे? आपके सर्किट के इनपुट्स कितने हैं? 4 बिट BCD नंबर है। सो फंक्शन टेबल्स जितने भी 7 आपके बनेंगे, इनपुट कॉम्बिनेशंस 4 होंगी। इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगी? 16 हो जाएंगे। Now, since we are using a BCD number to display a digit on the 7 segment display, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशंस डोंट केयर होंगी या कभी आएंगी नहीं या इनवैलिड होगी, कभी आप यूज नहीं करेंगे? बेसिकली वही वाली BCD वाली बात है, 0 से लेके 9 तक वैलिड नंबर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 वो इनवैलिड हैं, कभी भी आप इनपुट पे अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। फंक्शन टेबल में इन इनपुट्स के लिए आउटपुट पे क्या होगा? X होगा। जो बाकी पहले 10 कॉम्बिनेशंस हैं 0 to 9 उनके आउटपुट पे क्या होगा? बेसिकली zeros एंड 1s होंगे। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 बेसिकली वुड रिप्रेजेंट द नंबर फॉर विच दैट पर्टिकुलर सेगमेंट हैज टू बी टर्न्ड ऑन,
राइट. सो फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है फॉर सेगमेंट ए, राइट, जो टॉप हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है. आपने नंबर 0 डिस्प्ले करना है. सो फंक्शन टेबल जो होगा फॉर सेगमेंट ए, आउटपुट पे ए आ रहा है. फॉर कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 द आउटपुट वुड बी A1. यस. सो लेट अस हैव अ लुक ऑल दिस फंक्शन टेबल्स. और उसके बाद हम यूज करते हैं फंक्शन टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है टू मैप इट डायरेक्टली इनटू ए के मैप, और के मैप से हम एक्सप्रेशंस एक्सट्रैक्ट करेंगे. आपके ख्याल में कितनी एक्सप्रेशंस आएंगी? 7 आपके पास फंक्शन टेबल्स हैं, 7 कार्नॉफ मैप्स होंगे. कितने वेरिएबल के होने चाहिए? 4 वेरिएबल के होने चाहिए. सो 7 के मैप्स 4 वेरिएबल के. एक्सप्रेशंस कितनी आ जाएंगी? ऑफ कोर्स 7 कार्नॉफ मैप्स हैं, 7 एक्सप्रेशंस आएंगे. सर्किट क्या बनेगा? 7 डिफरेंट सर्किट्स बनेंगे, जो जिन सारों के इनपुट्स जो हैं वो 4 इनपुट्स के साथ कनेक्टेड होंगे. उन सारे सर्किट्स के 7 सर्किट्स के आउटपुट जो हैं वो हर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होगा. सो लेट अस हैव अ लुक एट द फंक्शन टेबल्स एंड देन द कार्नॉफ मैप्स. Let us first consider the 7-segment display. It is shaped like the number 8. It has 7 segments that can be lit in different combinations to display any digit between 0 to 9. The 7 segments are identified by segment numbers A, B, C, D, E, F and G. The 3 horizontal segments starting from the top are A, G and D respectively. The 2 vertical segments on the right side are segments B and C. The 2 vertical segments on the left side starting from the top segment are segments F and A. Now, to display the numbers 0 to 9, different sets of segments are turned on. For example, to display 0, segments A, B, C, D, E and F are turned on. To display the number 1, segments B and C are turned on. To display the number 2, segments A, B, D, E and G are turned on. To display the number 9, segments A, B, C, D, F and G have to be turned on. Now, the next thing which you need to determine is for which combination of digits does the segment A needs to be turned on. For example, segment A is turned on when numbers 0, 2, 3, 5, 6, 7 and 8 are displayed. Segment D, for example, is turned on when the numbers 0, 2, 3, 5, 6 and 8 are displayed. Similarly, different sets of segments are selected to display different digits. The 7-segment display circuit basically can be considered to be 7 different circuits having 4 inputs and 1 output. The 4-bit input of the circuit accepts BCD numbers and the output controls a single segment. Before implementing the 7 circuits, function tables for each of the 7 circuits have to be prepared. Let us have a look at the function tables. Consider the function table for segment A. It has 4 inputs which represent the BCD number, 4-bit BCD number. The total possible input combinations are 16. Since the BCD number has valid states from 0 0 0 0 to 1 0 0 1, therefore the remaining states starting from 1 0 1 0 to 1 1 1 1 are represented by X. That means don't care. Now let us look at the output of the function table. The output is represented by small a instead of F. Why? Because small a represents segment A. Now when the number 0 is displayed, segment A should be turned on. Therefore the output is set to 1. Similarly, when numbers 2 and 3 are displayed, segment A should be turned on. Therefore, at the output you have 1s. Similarly, for numbers 5, 6 and 7, the output is 1. And for numbers 8 and 9, the output is again 1. Let us have a look at the function table for segment B. Function table for segment B is similar to the function table for segment A. Again, 4 inputs and a single output. The output is of course represented by B, which represents segment B. Now, for the input combinations 0, 1, 2 and 3 and 4, the outputs are 1. That means for the numbers 0, 1, 2, 3 and 4, segment B has to be turned on. Similarly, for displaying numbers 7, 8 and 9, segment B again has to be turned on. So, in the function table, the output for numbers 7, 8 and 9, B is set to 1. The remaining 6 outputs are set to X, which means don't care. These states would never occur. Let us look at the function table for segment G, the 7th segment. Again, 4 inputs, single output. The output is represented by G, representing the segment G, of course. Now, you see 1s for the input combination 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. This means that segment G has to be turned on for these combination of inputs. Remaining combination of inputs do not require the segment G to be turned off. Therefore, they are set to zeros. Again, the states 1010 to 1111 are don't care. They are marked as X's or crosses in the function table. Now, in order to implement the function table, we need to find the simple expression
for segment A. How do we do that? We directly map the function table for segment A to a 4 variable Karnaugh map. Why a 4 variable? Because the domain of the expression is 4. 4-bit BCD number is being used. Now if you have a look at the 4 variable Karnaugh map for segment A, several groups are formed. The expression is simplified to give the following terms: A plus C plus BD plus B bar D bar. If the function table for segment B is mapped to a separate 4 variable Karnaugh map, we obtain the simplified expression B bar plus C bar D bar plus C D. Finally, when the function table for segment G is mapped to again a separate 4 variable Karnaugh map, we get the simplified output as A plus B C bar plus C D bar plus B bar C. We have looked at 3 function tables for the segment A, B and G. Similarly, we have looked at 3 Karnaugh maps where we have simplified the 3 function tables A, B and G. उन 3 Karnaugh maps से हमारे पास 3 different expressions मिल गई हैं. अब 3 different expressions क्या करेंगे? Ultimately implement करेंगे using logic gates. हर सर्किट का एक आउटपुट होगा, वो किसके साथ कनेक्ट करेंगे? वेल, ए की जो एक्सप्रेशन है, सेगमेंट ए की जो एक्सप्रेशन है, उसके सर्किट की आउटपुट जो है आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सेगमेंट ए के साथ. इसी तरह सर्किट जो आप बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे फॉर सेगमेंट बी, उसकी आउटपुट आप सेगमेंट बी के साथ कनेक्ट करेंगे. सिमिलरली द सर्किट व्हिच यू इंप्लीमेंट फॉर सेगमेंट जी हैज टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ सेगमेंट जी. इन सारे सर्किट्स की इनपुट्स जो है वो आपस में आपने जोड़ देनी एंड दे वुड बी कनेक्टेड टू द बीसीडी इनपुट, जो 4-बिट का नंबर आप अप्लाई कर रहे हैं. राइट. सो नेक्स्ट टाइम हम एक और सर्किट को देखेंगे, सेम फंक्शन टेबल्स बनाएंगे, मल्टीपल आउटपुट्स होंगे. I hope you have understood the Karnaugh map method of simplifying expressions. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरा मेथड देखेंगे जो हम यूज करेंगे टू सॉल्व एक्सप्रेशंस हैविंग मोर देन 5 वेरिएबल्स. इंशाल्लाह अगली दफा मिलते हैं. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.